grandfather, whom we used to call Bauji, he had a great aura around him, and aura was there because of his achievement, his personality. As a child, I realized that he was the central figure in the family and had to be respected, naturally. That he was the patriarch of the family. During his lifetime, he did more than or nearly 500,000 eye surgeries. This is a number which is almost impossible for any human being ever to accomplish in the future centuries also. He did more than 600 eye surgeries in one day. Maharaja Ganga Singh was the Maharaja of Bikaner. जो उनकी राजमाता थी, उनकी आंखें खराब हो गई, तो कहते हैं कि उन्होंने ग्रैंडफादर को कहा कि आप इनकी आंखें देख लो। तो उन्होंने कहा आप आ जाइए इधर, मैं आंखें देख लूंगा। पर वो राजमाता थी और वो घर से बाहर नहीं निकल सकती थी, तो उन्होंने कहा ग्रैंडफादर को कि आप इधर आ जाइए। So he went from here and he went by rail. He was met there. पूरा वहाँ पे फिटिंग्स होती थी, फिटिंग्स और कार्स वगैरह, उनको लेने आई। इन्होंने राजमाता को ऑपरेशन किया and it was successful. He gave him some pearls. This is a story which I've heard. And he told him that you are now a citizen of Bikaner state. And I'm grateful to you for your coming over here, because my mother cannot go there. And that from now on, anything you want in Bikaner, I will do it for you. और इनके लिए सम्मान केवल पंजाब में या मोगा में या हिंदुस्तान में नहीं, कश्मीर में भी इनका बहुत सम्मान था। मुझे बताया गया कि जब वो कश्मीर में पीओ के रास्ते से वो जा रहे थे, रावलपिंडी गए और उधर से लाहौर से गए थे, और ये पहुंचे, जगह जगह पर इनका बैंड बाजे के साथ सम्मान हुआ कि राजमाता, कश्मीर की राजमाता का ऑपरेशन करने के लिए, आंख का ऑपरेशन करने के लिए जा रहे, और वो सक्सेसफुल भी हुआ। माता को दृष्टि मिली, महाराज बहुत प्रसन्न हुए और एक सोने की थाली में
उन्होंने हीरे जवाहरात जो भी कुछ उनका रिवाज होता है राजा महाराजाओं का, इनको भेंट किए। डॉक्टर साहब को गुस्सा आ गया और ही वॉकड आउट। ये क्या हो रहा है, ये क्या है? और पीछे पीछे महाराजा, अरे क्या हो गया डॉक्टर साहब, क्या नाराज हो गए, क्या हो गया, कमी रह गई क्या? अरे कोई अपनी मां से फीस लेता है क्या? So there are 2-3 places. One was Maharaja Tilothu and also Darbhanga. So Darbhanga is a very famous place, and I think during those days India was Bengal and Bihar. India was not Delhi and Bombay or Chennai. The heart of business India or corporate India or real India, East India Company, pre-partition days, it was all Calcutta and around. So you see the intellectuals at one time, all the chief justices of India came from Bihar and West Bengal. So there was a whole lot of this thing there. So the people in Bihar at that time, the Maharajas, would call him for these eye camps. So that's the reason why Bihar is prominent in our memory. This is the story he told us. What happened was that woman, he sold off her. वो पहले गिरवी रखते थे ना, बर्तन गिरवी रख के उनके 10 रुपए 5 रुपए बड़ी फीस ली, उन दोनों फीस चुकाई। एंड रास्ते में द ड्राइवर टोल्ड हिम कि जी इन्होंने 5 रुपए, ये औरतें आपके अपने बर्तन गिरवी रख के आपकी फीस चुकाई। द गाय व्हाट he said, go back. Let me return this 5 rupees, and that is the time in the car he took a vow. I will not take any. This is a first-hand story he told us. I will not charge any fees from any poor person from today. वो ये है कि जब मैं स्कूल में कोई 11 साल का था देहरादून में, तो वो बोर्डिंग हाउस में मुझे मिलने आए। उन्होंने वहाँ एक कैंप रन करना था। अगले दिन वो आए और मुझे अपने साथ कैंप में ले गए। हज़ारों लोग थे वहाँ पे और बड़ा अच्छी तरह ऑर्गेनाइज था। मैं काफ़ी हैरान हो गया था देख के। आई वाज क्वाइट सरप्राइज। लोग एक लाइन में सब खड़े थे और डॉक्टर साहब हर बंदे को देख रहे थे। वहाँ पे 3-4 टेंट लगे थे, एक ब्लू, एक रेड, एक ग्रीन, शायद एक और ब्लैक, पता नहीं टेंट्स के कलर थे। और वो बंदे की आंख देखते डिसाइड करते कि इसको किस किस्म की ट्रीटमेंट देनी है, और फिर उसको पर्ची पकड़ा देते। उनका जो कंपाउंडर था वो सिर्फ कहते थे इसको ब्लैक, इसको ग्रीन, इसको ब्लू, इसको रेड, और फिर वो लोग अपने अपने कैंप टेंट्स में चले जाते थे। Whole process, like a factory assembly line, took 5 minutes, and in 5 minutes going from one table to another, he would have actually done 5 surgeries. So his average was 1 surgery a minute, and the highest he had done in a particular day was 600 plus. I mean, amazing. No man on earth could have ever done that. And all this, what he was doing, was recorded as historical facts. All the surgeries he had done in his lifetime, different categories of surgery a year, and this chart is still available with the family. एक बारी वो रेलवे स्टेशन पे जा रहे थे और गाड़ी जो है उनको पता था कि यहाँ पे 15-20 मिनट रुकेगी, तो वो सैर करने लगे। तो एक आदमी था तो थोड़ा ब्लाइंड था, तो उन्होंने बुलाया इसको, भाई इधर आओ, मैं तुम्हारी आंख देखता हूँ। तो उसका कहना था कि आप क्या आंख देखेंगे, डॉक्टर मथुरा दास ने जब मेरी आंख देख के कह दिया कि ये कुछ नहीं हो सकता, तो कुछ नहीं हो सकता, आप तुम जाओ। I mean, that was a huge big compliment for a person. कि भाई he said कि डॉक्टर मथुरा दास ने ना कर दी तो कोई भी नहीं कर सकता। Doctors would come all the way from US, London, every year to train under him. And they were amazed, and they were trained, and they knew what to do after seeing his techniques. So his techniques had become world famous, and therefore they found their way into textbooks. But all of this work that he was doing in these eye camps was for charities. And yet,
he was rewarded for a charitable work in significant ways. The stories that we got to learn, one particular Maharaja's dog required an eye surgery. And so he operated on the Alsatian dog of that Maharaja and took care of the cataract. And the Maharaja gave him a very nice Plymouth car at that time. So these are the type of things one has seen and heard of as part of growing up. He was an educationalist. He always encouraged my grandmother, who was, I think she had done her 10th only when she got married. He always encouraged her to study. And she went on after her marriage, in spite of having children. She did her FA in English, BA in Hindi, and FA in Urdu, and then she became a Shastri in Sanskrit. कोई भी इनको चिट्ठी लिखे, बड़े से बड़ा आदमी और छोटे से छोटा, चाहे पान की दुकान वाला लिखे, इन्होंने उसका जवाब देना है। ऑपरेशन करने के बाद दोपहर को जब थक जाते थे तो इन्होंने हर चिट्ठी का जवाब देना है। अगर खुद नहीं लिख सकते 2 लाइनें तो कोई किसी को बुला लेते थे, लिखो जाओ। ये बहुत बड़ी आदत थी उनकी। हर आदमी की, चाहे कोई सर्वेंट है, चाहे कोई चपड़ासी है, चाहे प्रिंसिपल है, चाहे साधारण आदमी है, जिसने भी इनको पत्र लिखा उसका जवाब जरूर दिया है। एक खासियत उनमें ये थी कि he would, if anybody came at about 12 o'clock, then he would not leave without having lunch with us. It did not matter what his status was. All it mattered was that he had come to see him and that he should have lunch with him. Everybody knew him very well, and everybody would do salam and he would do namaste. He was a unique fellow. Unique fellow. I don't know, I've never met a person like him in my life. Who was born to do good to the others. He looked after his stepsisters so well. When I was in Moga, the sister would often cry, I want to go and see my servant bhai. संसार से हूँ मैं यहाँ पर, और बचपन से मैं उनके पास हूँ। फैमिली क्या, छोटे मोटे आदमी क्या, हम लोग क्या, सबके साथ बहुत बढ़िया आदमी थे, बहुत अच्छा आदमी थे। Anybody who brought his mother, there was no transport system at that time. No buses flying from to Gopkar Road, and anybody who brought his mother on his shoulders for the operation, after he had put the mother on the stretcher, Bauji would go and touch that fellow's feet. You are a great man, you are doing so much for your mother. He never said, he never felt that he was a poor man who was doing this for the mother, but he made him feel great. What a good fellow he is to his mother that he's brought him. He had fractured his right arm. So उनके जो पेशेंट्स आते रहते थे, तो एक दिन बड़े दुखी हो गए, वो उठ के अपने बिस्तरे में बैठ गए और कहते हैं नहीं मैं आज ऑपरेशन करना है। It's amazing कि उन्होंने अपने स्लिंग इनको लगा रखी थी हाथ में, स्लिंग में से यूं हाथ निकाल के उन्होंने वो ऑपरेशन किया। Mind you, that time he was already 92 plus. And the same year he died also after a few days. But till end he was doing his operations. When we went to the ancestral home, we found that the people around still remembered him. This is like since partition, how many years? 60 years after partition. They remembered him, they revered him. The man across the street who was handling furniture was able to recount many things. The people who were still living in the house happened to be old friends to whom my grandfather has given that palatial house.
They came and showed us also the almaras of my mother and the room in which my mother was staying. So it was very good to see that how many lives he had touched and how they were all still revering and remembering the work that he had done. जो कुछ डॉक्टर मथुरा दास ने मोगे वास्ते किया है उन्होंने तो कोई बंदा भुला नहीं सकता। अज जो कुछ भी मोगा है वो डॉक्टर मथुरा दास के कारण है। मतलब ਉਹਦਾ बेस वधिया मोगा बनया है, ਉਹਦਾ बेस ਜਿਹੜਾ है वो डॉक्टर मथुरा दास ने रखा सीगा। मोगा के लोग जो थे वो कहते हैं डॉक्टर मथुरा दास मोगा है। उन्होंने यहाँ पर डीएम कॉलेज मोगा, एमडीए स्कूल मोगा, डीएम कॉलेज ऑफ गर्ल्स फॉर विमेन मोगा, डीएम कॉलेज ऑफ एजुकेशन आर्या गर्ल्स स्कूल न्यू टाउन मोगा में खोला, एमडीएस मॉडल स्कूल, डीएन मॉडल स्कूल, आर्या मॉडल स्कूल, एमडी सिविल हॉस्पिटल। मैं इसे स्कूल दे विच पढ़िया भी हैं। सो मथुरा दास जी ने सब तो पहला इस स्कूल की नींह रखी ਤੇ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਬਾਅਦ ਚ ਡੀਐਨ ਮਾਡਲ ਸਕੂਲ ਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਗਾਂਹ ਤੁਰੀਆਂ। In a way, many people still know and remember that the city of Moga was put on the world map by him. To Moga as a town, even the way it was developed, he had a big hand on the civil layout of the city. So people do remember him as the architect of Moga in more ways than one. आ एक नक्शा बनाया जी, ये मैं अपनी याददाश्त ने बनाया। बचपन च मैं ये वेख्या हस्पताल, ये डॉक्टर मथुरा दास जी के जमाने का हस्पताल है। ये उदों मेन बाजार है तो ये 80 साल पुरानी बिल्डिंग है। हुण तो नवी बिल्डिंग बन गई है। OPD है जिथे डॉक्टर बैठते सी, डॉक्टर मथुरा दास भी इत्थे बैठते सी। ਇਹਦੇ ਨਾਲ मैं एक खास कहना चाहना है कि आ जगह एक डिस्पेंसरी है जिथे डॉक्टर साहब आप हथी काम करते सी ते अखां धोंदे सी। उन्होंने यहाँ जब काम शुरू किया डॉक्टर मथुरा दास पावा ने, तो मोगा एक बिल्कुल गांव की तरह था। और ये जो हॉस्पिटल का एरिया है इसको मोगा का आउटर एरिया जो है वो माना जाता था। यहाँ काम करते हुए उनको ये लगा कि यहाँ दूर होने के कारण मरीज़ कम आते हैं, तो उन्होंने खुद गांव में जाकर शाम को सरकारी ड्यूटी के अलावा भी अपने मरीज़ देखने शुरू किए। और धीरे धीरे इस हॉस्पिटल का जो निर्माण है वो तरक्की करता चला गया। जहाँ तक मेरे परिवार का ताल्लुक़ है, मेरे दादाजी की शादी उन्होंने ही करवाई और कहते थे कि कन्यादान भी उन्होंने किया। हमारे में थोड़ी कमी है कि हम डॉक्टर मथुरा दास का सेलिब्रेशन तो यहाँ करते हैं उनके जन्म पे, मगर उतनी धूमधाम से नहीं करते। अब मेरे दिल में है कि हमारे स्कूल और कॉलेज डॉक्टर मथुरा दास को, जितना उनका परिवार है, उनको सम्मानित करने का मेरे दिल में ये बात है। हम मोगावासी कभी उनको भूल नहीं सकते, भुला नहीं सकते। ही वाज सच ए डिग्निटी। इस तो पहला मैं भी दसना चाहूँगा कि उस वेले साडा डॉक्टर मथुरा दास फैमिली नाल जो एक लोगों का संबंध पहला जुड़िया होया सी वो खत्म हो चुका सी। और सानू ये भी नहीं पता सी कि उन्हां दी फैमिली ज़्यादा कित्थे रहिंदी है, किनू कंटैक्ट किया जाए। पर असी उस तो बिना ही अपना प्रोग्राम नू लीक लिया, प्रोग्राम करन दा फैसला लिया और उन्हां दी याद विच एमरजेंसी गेट डॉक्टर मथुरा दास सिविल हस्पताल विच लगाउण दा फैसला लिया। पावा फाउंडेशन ग्रुप जो है वो हमारे स्कूल के लिए, बच्चों के लिए बहुत प्रोत्साहन का काम करते हैं। हर साल जो हमारे 9th क्लास में बच्चे मेरिट में आते हैं, 1st, 2nd, 3rd, उनको ये स्कॉलरशिप देते हैं, ट्रॉफीज़ देते हैं और हर साल खुद आकर उनको बच्चों को प्रोत्साहन देते हैं। ये पावा ग्रुप ऑफ फाउंडेशन की तरफ से बहुत अच्छा कदम है। जो पावा सर के ग्रैंडसन है दीपक पावा जी,
वो ये फाउंडेशन चला रहे हैं और वो ये सारा काम संभाल रहे हैं। जितने भी हमारे मोगा ज़िले में आर्या ग्रुप के जो स्कूल्स हैं उनमें भी ये जाते हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। We always wanted to have an eye camp in Moga because that is where Dr. Mathra Das Bauchi had done a lot of his work in his lifetime, and I had never been to this place before, and I didn't have too many expectations. I didn't know what to really expect when I reached this small town of Moga, but the reception that I got was unbelievable. All the elders of the community, they all came forward to meet me, to greet me, to have a special dinner for me, and just to be so respected and have that honor because I was from Dr. Mathra Das's family. अब उनके नाम पर यहाँ पर एक आई कैंप लग रहा है। इस कैंप में पूरी तरह से निःशुल्क सुविधाएं दी जा रही हैं। यहाँ तक कि अगर कोई ऐसा मरीज है जो नहीं आ सकता है, चाहे वो गांव में रहता हो, शहर में रहता हो, उसको लाने ले जाने की भी व्यवस्था है। हर बार, पिछली बार तो 1000 से ज़्यादा लोग आ गए थे, इस बार 800 का रजिस्ट्रेशन होना है। उनको प्रॉपर उनकी सारी सुविधाएं दी जानी है, उनकी सर्जरी होनी है, या सभी प्रकार की जो भी मिल सकती है। मतलब एक प्रकार से एक मानवता की दिशा में एक बहुत ही कदम अच्छा है। दोबारा जब मैं यहाँ दैनिक जागरण में आया तो सुनकर बहुत अच्छा लगा कि कम से कम ये बहुत अच्छी परंपरा उनके नाम पर शुरू हुई है। बहुत बढ़िया लगा जी, दवाई हर साल कैंप लगता है, दवाई हम बढ़िया दिंदे हैं, बढ़िया अख बनाते। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੇਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਨਵੰਬਰ ਜਾਂ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਪ ਲੱਗੇਗਾ ਔਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਲੋਕੀ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਕਦੋਂ ਕੈਂਪ ਲੱਗਣਾ, ਕਦੋਂ ਕੈਂਪ ਲੱਗਣਾ। ਔਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਦੋਂ ਆਪਰੇਟ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਇਸ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਅੱਖ 'ਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਅੱਖ ਆਪਣੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਣ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰੇਜ਼ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ इस कैंप ਦੇ ਵਿੱਚ सब कुछ ही फ्री है। कैटरेक्ट सर्जरीज टोटली फ्री, आई मीन मेडिसिन्स, एनका और ऑपरेशन का खर्चा कुछ नहीं लगता। पेशेंट्स ਨੂੰ कोई प्रॉब्लम नहीं होंगी और बाय गॉड ग्रेस एवरी पेशेंट हैज़ गुड विजन आफ्टर द सर्जरी। He was a very religious and pious man and a staunch Arya Samaji, a devout humanist with malice to none, was always considerate towards everyone and their needs, was always ready to help and assist both his near relatives and others in their hour of need, and was always fair to everyone. I've seen him take me many times to the Prime Minister's house just like that, and he says, okay, today we'll get some pictures taken. So that was the aura, and also it was only because of one thing, that he'd done so much work for charity. When he died, I came to see him in the hospital here. He just blessed me. I knew he wouldn't stay. I left all 3 children of mine and we were posted in Chennai. I left all my 3 children there. But then I said final goodbye to him and he just blessed me like this. Then what happened, when I went back, I knew he was going to die in a day or two. Deepak had booked a call. Then my husband rang me up from there. He said there's been a Voice of America just announced that he's no more. A BBC announced. There was the news all over the world. When I believe he died, the doctors, he came, Sheikh Abdullah specially flew with Chief Minister of Srinagar, Dr. Karan Singh, all the VIPs were there. He was very, very compassionate. Till today, I don't know whether I should say it, I've seen God on this earth in a human form. That was my grandfather.
हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदा।